going to that step, we will understand the concept of random variable first. So the random variable quantifies the outcome of the random occurrence of our interest. So let's say in this case x, which is number of red balls. Now let me take some examples and show it to you what it exactly means. Okay, let's say that I have one blue and three red balls. So here x is equals to 3 because we are taking x as the number of red balls and the number of occurrence in this scenario is 3. So x will be 3. अच्छा, मुझे उसकी जो समझ आई है ना, जो वो कंटेनर के अंदर 3 रेड, मतलब वो हमें नहीं पता, हम बगैर देखे उठा रहे हैं, ठीक है। हमें नहीं पता उस कंटेनर के अंदर कितनी बॉल्स हैं, ठीक है, लेकिन हमें ये पता है उसके अंदर 5 बॉल्स हैं, हमने 4 उठानी है, ठीक है। वी डोंट नो कि उसके अंदर 3 रेड हैं, 4 रेड हैं, कितनी है, जहां तक मुझे समझ आई है, ठीक है। Similarly, if two blue balls are there and two red balls are there, then x will become equals to 2. So this will be our random variable, which is of our interest. So now that we have seen what random variable means, let's now see the distribution by allotting some balls picked by all the 75 players and jot them down in the frequency of their occurrence in this histogram. So what we have done is, in this histogram we have numerically scaled the x-axis with the number of red balls, and on y-axis we have mentioned its frequency of occurrences by all the 75 players. So the another way to look at this is that 2 players have got 0 red balls and 4 blue balls. Then 12 players have got 1 red ball and 3 blue balls. 26 players have got 2 red balls and 2 blue balls, and likewise. So as per the second step, now what we need to do is we need to find the probability of each of the combinations. Okay, so this is for 75 players, and then we need to find out the probability for each of the player. So for that what we'll do is we'll अच्छा, इसमें फ्रिक्वेंसी जो है, नंबर ऑफ प्लेयर्स 75 है, तो ये टोटल जो है 12, 14, 26 कितने हो गए, 40, 25, 65 और 10, 75। तो 75 लोगों ने वहाँ से बॉल्स उठाई हैं, 4 बॉल्स उठाई हैं। तो ये किस तरह इसने हिस्टोग्राम कैसे बनाई है, खुद से बना ली है? सर वो उसने हिस्टोग्राम इस तरह बनाई जिस तरह वो जीरो पे, जो जीरो पे थे उन्होंने 4 ब्लू उठाई हैं वो उसने सामने चार्ट में बनाया हुआ है, और जो 1 वाले थे उन्होंने 3 ब्लू उठाई हैं और 1 रेड उठाई है, और जो 2 वाले थे उन्होंने 2 ब्लू और 2 रेड उठाई हैं, और इस तरह सारा चार्ट में लिखा हुआ है। नहीं, वो तो लिखा हुआ है, लेकिन 26 लोगों ने ये उठाई हैं, 25 लोगों ने ये उठाई हैं, 4 लोगों ने ये उठाई हैं, ये इसने किस तरह बनाया? ये इसने एज्यूम किया है। दो सर दो मुझे तो लोगों ये ने जो लगा है जी ना वो जूम किया उसने। 2 लोगों ने जो है ना वो ये एज्यूम किया इसने। So this will be our random variable, which is of our interest. So now that we have seen what random variable means, let's now see the distribution by allotting some balls picked by all the 75 players and jot them down in the frequency of their occurrence in this histogram. So what we have done is, in this histogram we have numerically scaled the x-axis with the number of red balls, and on y-axis we have mentioned its frequency of occurrences by all the 75 players. So the another way to look at this is that 2 players have got 0 red balls and 4 blue balls. Then 12 players have got 1 red ball and 3 blue balls. 26 players have got 2 red balls and 2 blue balls, and likewise. So as per the second step, now what we need to do is we need to find the probability of each of the combinations. Okay, so this is for 75 players, and then we need to find out the probability for each of the player. So for that what we'll do is we'll just divide the frequency by the number of players in total who played this game. So let's do that. Okay,
So for 0 the frequency was 2, so 2 divided by 75. Then for x is equals to 1, there were 12 players who have got 1 as their red ball, so I'll just say 12 divided by 75, and likewise I will just dot these down. So guys, what is the purpose of creating this probability table is, right now what we have is only small number of players, that is 75 players playing this game. Now let's say that we have 1000 players playing with us and we have to estimate the number of players picking only one red ball. So what we will do is, basis on our probability, we'll just multiply the probability for picking one red ball by 1000 to get number of players picking one red ball. So this is the exact reason why we do sampling also, to calculate the probabilities for the larger population, which is the sole purpose of inferential statistics. So as we जबरदस्त बात नहीं होगी कि आपने एक सैंपल 75 का सैंपल लिया, 75 बंदों को कहा जी आप उठाएं, तो उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया, उसमें से जो है ये आउटकम आई उनकी, ठीक है, 2 बंदों को ये मिला, 12 बंदों को ये मिला, 26 बंदों को ये मिला, 25 को ये मिला और 10 को ये मिला। आपने प्रोबेबिलिटी निकाली, हर एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी निकाली, ये आ गई। और आप कहते हैं कि आप 1000 बंदों को अगर खिलाएं या 1,00,000 बंदों को खिलाएं, तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे उसको नंबर, टोटल नंबर को, तो वो आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। The number of players is 1000, then the number of players with one red ball कितनी होगी? वन रेड बॉल क्या होगी? 1600, 1000 से ज़रब दे देंगे तो 1600 बंदे जो है ना वो एक रेड बॉल उठा पाएंगे। The 1000 people are playing, what is the total number of red balls you can expect them to take out? तो अगर हमारे पास 1000 बंदे हों तो हम टोटल कितनी रेड बॉल उठा पाएंगे? तो अगर 1000 बंदे हों तो लाजमी बात है कि ये ज़रा क्वेश्चन उल्ट हो गया। अब यहाँ पे जो है 4 रेड बॉल उठा पाएंगे 133 बंदे, यहाँ पे 3 रेड बॉल उठा पाएंगे 333 बंदे, यहाँ पे 347 बंदे जो हैं 2 रेड बॉल उठा पाएंगे, और 160 बंदे जो है ना वो एक रेड बॉल उठा पाएंगे। तो दैट मीन्स 4 दिन 7 2 9 और 1 10, नहीं 10 टोटल बॉल है ना, तो 10 को मल्टीप्लाई कर दो, the 1000 people are playing, what is the total number of red balls? अब ये कैसे 160 बंदे अगर उठाएंगे एक बॉल तो 160 बॉल होगी, 347 बंदे 2 बॉल उठाएंगे, 347 ज़रबे 2, 333 ज़रबे 3 और 133 ज़रबे 4, इनको आप मल्टीप्लाई करके सबसे, तो वो टोटल हो जाएगी मेरे ख्याल में। यानी कि अगर मैं समझ पाया हूँ सही, हम उसको खुद से करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सर ये सिंपल ऐड करेंगे तो 1000 बन जाएंगे ना सर? नहीं 1000 पीपल है ना सर, पीपल है ना 1000 पीपल उन्होंने गेन 1000 पीपल है ना सर। हाँ, इनको ऐड कर दें, ये 4 7 7 7 9 9 और 1 10, और नहीं सर, अच्छा 10 सर एक बात, नहीं सर, नहीं ये ऐसे होगा, 160 बंदे जो हैं वो कितनी बॉल उठा रहे हैं? एक, प्लस 347 कितने उठा रहे हैं? 2, तो ये 347 मल्टीप्लाई 2 कितना हुआ? सर वो 2 बॉल्स नहीं उठा रहे, वो जो 2 नंबर वो किया, वो मेंशन किया कि उन्होंने 2 रेड ब्लू बॉल उठाई और 2 रेड बॉल उठाई। सर वही 2 रेड उठाई है ना, यही 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 160 को 147 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना। अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितने बंदे आएंगे? ठीक है, ये आएंगे 333, ये आएंगे 133 और ये आएंगे 160। अब इस 160 बंदे एक बॉल उठा रहे हैं, 47 बंदे ये उठा रहे हैं, ये उठा रहे हैं, इससे मल्टीप्लाई कर दें, ये टोटल इनको प्लस कर दें, ये नंबर ऑफ बॉल्स आएंगी, मेरे ख्याल में ये आएगा। अब आगे देखते हैं होना आगे वो क्या करता है। He said if number of players are 1000
then the number of players with one red ball would be 0.16 into 1000, which is 160. So likewise for each one of these we can calculate it. So this will be 27 and 160, 347, 333 and 133. Okay, so if these are the numbers and if 1000 people are playing, what is the total number of red balls you can expect them to take out? So for this, what we'll do is we will multiply this value with the frequency of their occurrences. So this becomes 0 because if 27 is multiplied by 0, it will be 0. And for the others, we will just mention it here. ठीक है, उनको सम कर लिया, So now सबको that we multiply have करके ना calculated the total number of red balls, सम कर लिए. what we can do is we can also find out the average number of red balls drawn by one person. And for that, we just need to divide this by number of people who played this game, which is 1000. So this is 2.385 red balls per person. Now why we did this? Because we need to calculate the expected value, which is our final aim. Okay, remember guys that the step 3 said that use the probabilities to estimate the profit loss per player. So that profit and loss is the expected value here, because profit in this case is gaining more red balls. Okay, so the expected value by definition means that it is an anticipated. सर ये जो 2385 लिखा हुआ ये कैसे है, मुझे समझ नहीं आई. वो उसने जल्दी से गुजार दिया ना. ये नीचे देख रहे हैं जो मैं कर रहा था, 160 मल्टीप्लाई 1, 347 मल्टीप्लाई 2, 333 मल्टीप्लाई 3, 133 मल्टीप्लाई 4. तो उन सबको सम कर दिया तो वो टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स हो जाएंगी, जो कि आपके पास 2340 आ रहा है आगे. ओके सर. 2385 So now समझ आई? जी सर समझ आ गई. now that we have calculated पता the मकसद step क्या 3 था कि said हमें that प्रॉफिट लॉस पर प्लेयर निकालना था. तो प्रॉफिट लॉस पर प्लेयर या उसको क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है ना, वो ईवी, वो ये होती है. ठीक है, use the probabilities to estimate the profit loss per player. So that profit and loss is the expected value here, because profit in this case is gaining more red balls. Okay, so the expected value by definition means that it is an anticipated value for an investment at some point in the future. So our investment is based upon the red balls count, and the expected value is calculated as such. So it will be calculated by multiplying each of the possible outcomes by the likelihood each outcome will occur, and then summing all of those values. So it will be something like x1 into probability of x is equals to x1, then plus x2 into probability of x is equals to x2, plus, and then going this to xn into probability of x is equals to xn. So now that we know the expected value formula, we'll substitute the values for corresponding x and their respective value for the probability of x. So the equations become 0 into probability of x of 0 plus 1 into probability of x of 1 plus 2 into probability of x of 2 plus 3 into probability of x of 3 plus 3 into probability of x of 4. So now we'll substitute the various probabilities. Now you'll observe that we have taken into account all the probabilities and all the values of x in this calculation of expected value. Now what we'll do is we'll assign the random variable x to the money won after playing the game once, and then we will see what is the expected value and is it beneficial for the player to play the game or not. Now what we are doing is, as planned, we need to calculate on an average player how much each person is winning, or if this game is a beneficial for player or the house. So for that I've made x as a random variable which says money won after playing the game once, and ideally it should take these reward points, that is 150 when the player draws 4 red balls, that is this case, and minus 10
when even one ball is not red. So for simplicity, so that you guys are not confused, I have made x as the random variable with the reward points, or you can consider them as rupees, and for the number of balls drawn, I have kept that as variable y. Okay, so what we have to do is we have to calculate the probability of getting 150 rupees, that is in short probability of getting 4 red balls. So this is clearly this thing, so we'll just mention it here, and we need to calculate probability of getting minus 10 as reward points. So this says that when even one ball is not red, which is rest of the cases. So we will substitute these values over here. So 0.027, यहाँ पे तो रेड बॉल आई थी, when even one ball is not, अच्छा अगर एक भी यानी कि 4 बॉल्स में से अगर एक भी रेड नहीं, मतलब अगर एक भी कम हो जाती है रेड, तो उसमें आपके पास जो पॉइंट्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे -10। एक्सपेक्टेड वैल्यू ये है, x इज इक्वल टू मनी वन आफ्टर प्लेइंग द गेम वंस, रैंडम वेरिएबल, ये x आपका रैंडम वेरिएबल है, तो x कैन टेक 2 वैल्यूज, मतलब आपने एक रूल बना दिया कि x जो है वो आपकी जो मनी है वो आपके या तो डिडक्ट होगी, या पॉइंट्स हैं, या आपको अवार्ड होंगे। ये तो वो होगी यार, वो क्या कहते हैं, जैसे वो नहीं होती शर्त लगाना, क्या कहते हैं उसको। अच्छा ये x, अगर आपने 4 बॉल उठाई हैं तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, अगर आपकी एक बॉल भी मिस हो गई, यानी कि 3 अगर आई हैं, तो तब भी आपको क्या है, मतलब पनिशमेंट होगी। तो ये इस तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 150 रुपीज़ वो क्या होगी, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 4 रेड बॉल्स ऑल टुगेदर, वो आपकी वो प्रोबेबिलिटी है 0.133। और प्रोबेबिलिटी ऑफ पनिशमेंट, तो वो पनिशमेंट की प्रोबेबिलिटी ये है कि इन चारों केसेस में से कोई एक केस, ये सब केसेस में से जो आपके टोटल प्रोबेबिलिटी है इन सब की, लाजिम बात है अगर इसमें नहीं आ रहा तो इनमें आएगा, तो इन सब को सम करें। okay, and now what we have to do is we need to calculate the expected value. So as we have seen earlier that it is nothing but just the summation of product of x and their probabilities. So we'll consider x as 150, and then the probability for x as 150 is 0.133 plus minus 10 into 0.867. So this comes to 11.28, which is in positive. So what this positive value indicate here for this expected value, that the game is a disaster for the house, and on an average a player will win 11.28 rupees and a penalty is only minus 10. So if a lot of players play, एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो आपकी क्या है, वो कह रहा है कि भाई आपने प्रेडिक्शन करनी है कि क्या आपका जो हाउस है, जो जुआ खाना है, वो क्या पॉजिटिव में जाएगा या नेगेटिव में जाएगा। तो असल में क्या है, वो नेगेटिव में जाएगा, क्योंकि ऑन एवरेज जो एक्सपेक्टेड वैल्यू आ रही है वो आपके 150 रुपीज़ मल्टीप्लाई इट्स प्रोबेबिलिटी, ये इसके मुताबिक, ये आपका जो ऊपर ये वाला फार्मूला है, इसके मुताबिक कि इन दोनों प्रोबेबिलिटीज़ को इनकी वैल्यूज से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 150 रुपीज़ की जो प्रोबेबिलिटी है उसको उससे मल्टीप्लाई कर दिया और 10 की उससे, तो जब इनको सम किया तो 11.28 रुपीज़ जो है वो विन करके जाएगा ऑन एवरेज हर बंदा। तो क्या होगा कि ये लॉस है। play this game, we will end up losing a lot of money. So if we want to make profit, or if the house wants to make a profit, then either decrease the prize money or increase the penalty. So this will make the expected prize won on an average by player in negative. Now let's say that we want the house
to win. So in order for house to win, we need to change either of the conditions of either increasing the penalty or decreasing the prize amount. So let's say that we are increasing the penalty to 25, and let's check with this what value we'll get, and then decrease the price to 90 and check with this too. So in the first condition, it will be p x equals to 150, and we'll calculate this as 0.133 into 150, which is 19.95, and p x equals to minus 25, which will be 0.67 into minus 25, which is 21.675. So this sums up, we need to add this. So this comes up to minus 1.725, and let's check this value also. So p x is equals to 90 and p x is equals to minus 10. So for this case, 0.133 again into 90 equals to 11.97, and this is 0.867 into minus 10, which is minus 8.67, and this sum comes up to 3.3. So you can clearly see that increasing the penalty to 25 makes the difference, and that is the reason we are seeing minus in the expected value. So this approach works for us, but this does not help much in the case of house winning. So this sums up the expected values and random variable introduction to you guys. Let me know if this session helped you in covering the scenarios you were looking for. If you liked it, please don't forget to give it a thumbs up, and if you are new to this channel, please don't forget to subscribe and hit the bell icon for future updates. I will be comprehensively covering more statistical concepts and example in my upcoming sessions as well. So stay tuned. Thank you for your continuous love and support to this channel. I will see you guys in the next session. Until then, take care and happy learning. चलें, आज का तो इतना ही काफ़ी है। और मेरा ख्याल में दोबारा सेशन शुरू करते हैं, क्योंकि फिर नए सेशन की रिकॉर्डिंग होगी तो